So guys, whenever we are talking about any metabolic pathway, keep in mind that it will have some clinical implications always, because the metabolic pathways are occurring in our body, and our bodies always face all sort of challenges also to cope with different sort of conditions. So any condition which is leading to the disruption of that metabolic pathway will definitely have clinical relevance. तो clinical relevance हमेशा metabolic pathway में रहती है. ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली हम जब बायोकेमिस्ट्री 2 के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको जहन में रखिए, आप कुछ भी पढ़ रहे हों उसकी किसी ना किसी तरीके से मेडिकल के साथ बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, उसकी क्लिनिकल रेलिवेंस बहुत ही अनक्वेश्चनेबल है. इसी तरह ग्लाइकोलिसिस, जैसा कि हमने पता है, इट्स अ सेंट्रल पाथवे, then it's inevitable that any problem in glycolysis will give rise to certain clinical disorders also. तो जो ग्लाइकोलिसिस के डिसऑर्डर्स हैं, ये बेसिकली जब डिफेक्ट जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में हो रहे हैं उसकी वजह से पैदा होंगे. दे आर इनहेरिटेड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इनहेरिटेड. जेनेटिक्स उनको गवर्न कर रही है. यू वट एवर डिसऑर्डर इज इन यू because of, I mean, glycolytic enzymes, that is because of the mutation you get from your parents in those enzymes. One of the most important enzyme is pyruvate kinase deficiency. In addition, there are other enzymes also, glucose phosphate isomerase, phosphofructose kinase, and so on and so forth. I mean, any enzyme actually which is part of the glycolytic pathway, if it is mutated, if there is any problem in that enzyme, definitely it will have clinical implications. Keep this thing in mind. Now let's talk a little bit about different types of disorders. One, of course, is the hemolytic anemia. In hemolytic anemia, what happens that your red blood cells, the glycolysis occurring in those cells is not really being done in a proper way. There are some problem in it. It may be due to certain enzymes like hexokinase or any other enzyme which is involved in the glycolysis in RBCs. This defect leads to, of course, the failure in the production of ATP. जब ATP ही नहीं पैदा हो रहा, what will happen when ATP is not being produced? The cell will not be able to do what they are doing. And what RBCs are doing? They are carrying oxygen. That's why these patients will then face anemia. They will face a lack of oxygen. They will face the bursting of their red blood cells, loss of their red blood cells, and so on and so on. Then there is lactic acidosis. You can, I mean, you know that lactic acid is produced because of anaerobic glycolysis, and sometimes it may happen that there is some real problem in some of the enzymes which are responsible for carrying out the aerobic glycolysis. तो जब aerobic glycolysis नहीं हो रही है तो body क्या करेगी? Body will do, of course, body will depend upon the anaerobic glycolysis, which gives rise to the formation of lactic acid. और जब lactic acid पैदा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में आ जाएगा. लिहाजा वो तमाम टिश्यूज जिनमें ऑक्सीजन सही तौर पर मौजूद नहीं, उसकी कई रीजन हो सकती है. एक रीज़न ये कि आपका ब्लड ही सही काम नहीं कर रहा, सॉरी, आपका हार्ट ही सही काम नहीं कर रहा. जब आपका हार्ट सही काम नहीं कर रहा, व्हाट विल हैपन? दैट इट विल डिपेंड अपॉन द एनारोबिक ग्लाइकोसिस. देयर विल बी मोर एंड मोर लैक्टिक एसिड एंड गिव राइज टू लैक्टिक एसिडोसिस. इसीलिए हम कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर, लैक्टिक एसिड इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर दैट योर हार्ट इज वीक. Also, when you are running a lot, when you are doing a lot of exercises, you face the deficiency of oxygen. Again, oxygen is not there, or this is it's much less. What will happen? आपको दोबारा से anaerobic glycolysis की तरफ जाना पड़ेगा, and of course it will produce lot of lactic acid, giving rise to lactic acidosis. It has its own complication. Then hyperglycemia, of course, I mean you can
एनविसेज इट, आप इसको सोच सकते हैं कि आप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग ब्रेकन डाउन, where it's not getting broken down, what will happen? It will be accumulating and accumulating and accumulating in your blood, in your cells. What will actually happen? What will it lead to? It will lead to then real problems with the metabolism of the glucose. Excessive glucose is always harmful. One of the worst harm it has is on your cardiovascular system. आपका दिल पर इसका असर होता है, आपके दिमाग पर भी असर होता है, आपकी वाउंड हीलिंग पर भी असर होता है, जो कि हम अभी देखें जैसे कि डायबिटीज पर होता है, बीमारियों की बीमारी. इट इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम. आई मीन व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन मेडिकल साइंस इज दैट diabetes is proliferating. I mean, in terms of the people who are affected, the number of people who are being affected by diabetes is proliferating. अब पाकिस्तान ले लें, इंडिया में चले जाए, इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में चले जाए, डायबिटीज नहीं रुक रही. तो ग्लाइकोलिसिस डायरेक्टली तो नहीं डायबिटीज करती, लेकिन इनडायरेक्टली इट एक्सेबरेट इट ये तेज करती है, ये बुरा तरफ लेके. आई मीन somehow if there is a little bit of problem which is leading towards diabetes, because of problems in the glycolysis, what will happen, it will be then exponentially increase, the problems will exponentially increase, which will lead to ultimately really a bad type of diabetes, or diabetes which is not controllable. तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि what actually happened that especially in the type 2 diabetes कि आपकी insulin resistant है, वो the insulin is not been able to really work upon the glucose. तो फिर क्या होगा, अगर इंसुलिन काम नहीं सही तरीका रही, ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो रही है, ऊपर से ग्लाइकोलिसिस में भी मसला हो रहा है, ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो रही, तो ये सारा ये और ज़्यादा पचीदा हो जाएगा. इट विल बी गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, giving rise to real problem. The diabetes will be uncontrollable, ultimately leading to other complications of the diabetes. For example, the body breaks down fat when there is no glucose available for the production of the energy, giving rise to the diabetic ketoacidosis. And of course, then more and more diabetes also leads to cardiovascular problems also. That's why we say that somehow problems in the glycolysis may not be directly involved, but indirectly it exacerbates the process of diabetes development if there are problems in the enzymes which are controlling the process of glycolysis.